Hello students, I hope you have gone through the changes which occurs in boys and the girls during the puberty. The video that I have shared, it has very clearly explained each and everything, that how you can calculate your full height when you will be at the age of 18 or the age of 16. So you can calculate this by using this method. This is the method to calculate your height. Apart from that, one thing is another thing which is mentioned here. The height जो है, it is the trait which is also controlled by the genes, and we have studied about the genes that we get from our parents through the DNA. Apart from that, another thing, that change which occurs during the puberty that we have discussed here in the video also, change in the shape of the body. When these changes occurs, the in the boys they have given, you can see here, the because they have entered the age of the puberty, the shoulders they become generally broaden as a result of the growth. In the girls, the region the below the waist become wider. In the boys, the muscles of the body they grow more prominently than in the girls, so they look very different during the adolescence period. Okay, another important thing, that is the voice box which occurs because of the change. You can see here the voice box which causes these changes, that is the larynx जो है boys में, they have the large voice box. ठीक है, voice box or the larynx, and it can be seen as a protruding part of the throat, and that is known as the Adam's apple. You can see in the book even the figure 10.2, they have explained here. You can see here this portion, that is known as the Adam's apple. ये इस तरह से दिखाई देता है. ठीक है, but in girls it is hardly visible from the outside because of its small size. So that's why generally the girls they have a high pitched voice, whereas the boys they have a very deep voice. Okay, and sometime the muscles of the growing box मतलब क्या है, larynx, sometimes they go out of the control and the voice becomes very hoarse. आवाज़ बिल्कुल फट जाती है. ठीक है, तो ये जो है, that is the feature which comes in the boys and the girls. Then another important thing that is there, that is increased activity of the sweat glands and the sebaceous glands. ठीक है, पुबर्टी के दौरान ये भी चेंजेस आते हैं, स्वेट ग्लैंड्स और द सेबेशियस ग्लैंड एक्चुअली द ऑयल ग्लैंड्स इन द बॉडी, देयर एक्टिविटी और स्क्रीशंस फ्रॉम देम इंक्रीजेस. ठीक है, द पीपल बिकॉज ऑफ दीज सेबेशियस ग्लैंड्स और द स्वेट ग्लैंड्स और द ऑयल ग्लैंड्स, फेस के ऊपर अचानक से पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, ये भी एक यूनिक फीचर है, चेंज है, जो कि पुबर्टी के दौरान साइन होता है. देन डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स. ठीक है, we have done in the previous chapter the sex organs of the human beings. During the puberty, the male organs, the testes, the penis, they develop completely. The testes they start to produce the sperms. Girls may ovary also start producing the eggs. So these are the points which occurs, these are the things which occurs during the adolescence period. Then another important thing, that is the most important we can discuss, that is reaching mental, intellectual and emotional maturity. So ये बड़ा important चीज़ है. जैसे अभी आप इस क्लास के बच्चे हो, तो आपकी क्लास में क्या होगा, एडोलेसेंस ये पीरियड जो है, आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है. ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगा. अब कैसे होगा चेंज, मैं आपको बताता हूँ. ठीक है ना, द किड्स, यू गाइज, you will feel more independent than before, and you will be also self conscious. शीशे के आगे ज़्यादा खड़े हो गए आप. ठीक है, मोर इंडिपेंडेंट, आप डिसीजंस जो हैं खुद लेने, आपके रोल मॉडल. ठीक है, यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे अब्दुल कलाम की तरह बनना है, या मुझे शाहरुख खान की तरह बनना है. ठीक है, आमिर खान की तरह बनना है. तो इस तरह की जो सोच है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, then you start thinking more. ठीक है,
kids at that time they start thinking more, actually they start exploring themselves, ठीक है. And this time, actually this is the time when the brain has the full capacity to learn also, clear. But sometimes the kids, because it is the emotional maturity is also there, emotions are very up and down in the kids at this time, ठीक है. They feel very insecure while they are trying to adjust themselves the change in the body and the mind. बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, माइंड सोच रहा होता है, तो कुछ लोगों को खुद ही नहीं समझ आ रहा होता कि हो क्या रहा है ये, ठीक है. बट इसमें ऐसा होता है कि इसमें इनसिक्योर होने की ऐसा कोई फीलिंग की ज़रूरत नहीं होती. दे आर द नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप. अब इसमें कैसे होता है, जैसे सपोज अभी तक जो है छोटी क्लासेस तक या छोटी एज तक होता है कि पेरेंट्स जो ला रहे हैं वो ला रहे हैं, अपनी मर्जी से ला रहे हैं, बच्चों से इतना पूछा नहीं जाता, ठीक है. और बच्चों को फ़र्क भी नहीं पड़ता, बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो दैट इज़ फाइनल. बट इस एज में क्या होता है सम टाइम कि सपोज पेरेंट्स ने कार लेनी है और या कोई चीज़ लेनी है, तो फिर आपसे पूछते ही नहीं है, आपसे कलर चॉइस, आप वो कह रहे हैं कि हमने रेड कलर की लेनी है, आपको वाइट कलर अच्छा लग रहा है कि घर में पापा कार लेंगे तो वाइट कलर की लेंगे, तो आप में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा पेरेंट्स से कि यार मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है. तो इमोशनल जो मैच्योरिटी जो का ये पार्ट होता है कि आप अपने आप को, मतलब आप चाहते हैं कि आपको भी हर एक चीज़ में डिसीजन मेकिंग में आपका भी आप जो है वो राय ली जाए, आपका भी जो भी आपकी थिंकिंग है उसको पूछा जाए, ठीक है ना. तो ये सारा का सारा कब होता है, ये इसी पीरियड में, एडोलेसेंस पीरियड में ही होता है. इज़ दैट क्लियर? देन नेक्स्ट इज secondary sexual characteristics. In the previous chapter we have also done that the testes and the ovaries, they are the reproductive organs. They start producing the gamete, means sperm and ovum. The girls, the breast begin to develop at the puberty, ठीक है. Then the boys, they also there is a beginning in the to grow the facial hairs. उनकी दाढ़ी मूंछ आनी हल्की हल्की शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो ताकि बॉयज़ और गर्ल्स में क्लियरली डिस्टिंग्विश हो सके. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है ये, ठीक है. बॉयज़ दे हैव द हेयर्स ऑन देयर चेस्ट, ठीक है. बोथ बॉयज़ एंड द गर्ल्स दे हैव द हेयर्स अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइज एंड देन द प्यूबिक रीजन, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स, now listen very carefully, whatever the things which are taking place in you means that is the secondary sexual characteristics. They are because of a very important chemical that is known as hormone. We call it hormone. So combined term है, composite term which is used for that thing, for which control these changes during the adolescence. We call them the hormones. Now what these hormones are? The hormones are the chemical substances which are secreted from the endocrine glands. अभी हम आगे एक डायग्राम करेंगे जहाँ पे हम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे. तो हम इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं अभी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स की. तो ये करैक्टर्स किन किन हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में क्या होते हैं, अपीयर होते हैं. मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ द पुबर्टी start releasing a very important hormone that is known as the testosterone. Testosterone जो है, it causes the changes in the boy which we were talking about, okay. Growth of the facial hairs, we can say the secondary sexual characteristics. Similarly in the girls, the ovaries, they also produce a female sex hormone, we can say, that is known as the estrogen, ठीक है, which makes the development of the what we can say development of the breast start taking place in the females. The milk secreting glands, the mammary gland also develop inside the breast, ठीक है. And all these things, what this testosterone and the estrogen, both of them are under the control of another hormone which is secreted from the pituitary gland, ठीक है. So pituitary gland, we can say, it is known as a master gland in our body. We will study that why it is known as master gland, because this gland, pituitary gland, secretes large number of the hormones, okay. Now they have given here